Good morning, dear students. Today we will discuss about the second chapter again, integers. Okay. In last class we have discussed about the exercise first D based on multiplication and division of integers. Okay. Today we will discuss about the last exercise of this chapter, first E, problem solving questions. Okay. Problems based on story. Okay, story based problem. Clear? So now I am going to proceed. Start first E. First question given. At Srinagar, the temperature was -4 degrees centigrade on Monday. Temperature on Monday. What was the temperature on Monday? Question number first. Okay. Temperature on Monday. How much? -4 degree centigrade. Clear? Then it dropped by 2 centigrade on Tuesday. Tuesday क्या हुआ? 2 सेंटीग्रेड और ड्रॉप हो गया, यानी कि कम हो गया. So temperature on Tuesday. Temperature on Tuesday -4 -2 degree centigrade. -6 degree centigrade. Yeah, drop by 2 degree centigrade. So if temperature will decrease, means drop, it means we have to subtract. Clear? Now next, what was the temperature of Srinagar on Tuesday? Temperature of Srinagar on Tuesday. Okay. So temperature of Srinagar on Tuesday, how much? -6 degree centigrade. -6 degree centigrade. Clear? Now on Wednesday it rose by 5 degree centigrade. और Wednesday को क्या हो गया? 5 degree centigrade increase कर दिया. Clear? So temperature of Srinagar on Wednesday. Wednesday को क्या टेम्परेचर होगा? Okay? Temperature on Wednesday rose by 5 degree centigrade. So here -6 plus 5. -6 plus 5. Okay? Means difference of two integers. So here -1 degree centigrade. -1 degree centigrade. Clear? This is the first question. What is given? Temperature of Srinagar on Monday. Temperature of Srinagar on Monday. कितना था? How much? It was -4 degree centigrade. Then it was drop. गिर गया, कितना डाउन होगा? -2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ ना. ड्रॉप कितना हुआ? 2 डिग्री सेंटीग्रेड. सो वी हैव टू सबट्रैक्ट -2. सो -4 -2, हाउ मच? -6. बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स शुड बी एड. सो ऑन ट्यूसडे इट बिकम्स -6. नाउ अगेन वेडनेसडे इट रोज बाय कितना बढ़ गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो -6 प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड. So on Wednesday it was -1 degree centigrade. Clear? Now we will proceed to the second question. Second question, exercise. Second question. Ramesh deposits 5,000 in a bank. So deposit amount given. Deposit amount by Ramesh. Deposit amounts how much? Rupees 5,000. Rupees 5,000. Okay? In his bank account. Next day withdrawal 3,780. दूसरे दिन रमेश ने क्या हुआ? 3,780 रुपीज विड्रॉल कर दिया, निकाल दिया. So withdrawal amount how much? Rupees 3,780. Okay? Clear? Now find the balance in his account after the withdrawal. So balance amount कितना बचा?
इतना था, इतना निकाल लिया, ओके। डिपॉजिट अमाउंट दिस ये था, विड्रॉल इतना कर लिया। सो बैलेंस कितना होगा? हाउ मच बैलेंस अमाउंट? दिस 5000 minus 3780. Subtract this one, you'll get the answer 0. Here 10 minus 8 2, 9 minus 7 2, here 4 minus 3 1. How much? 1220 rupees. 1220 rupees. Clear? So this is the balance amount after the withdrawal. Clear? Now we proceed to the next question, third one. Okay. Next, third question. A plane is flying at a height of 6,300 meter above the sea level. एक प्लेन जो है वो कितना हाइट पे फ्लाई कर रहा है? थर्ड क्वेश्चन. A plane is flying. A plane is flying from the sea level. This is sea level. Height of 6,300 meter. 6,300 meter. Height is given. Okay. This is your plane. This is height. Height is given. Clear? Above the sea level. Above the sea. This is your sea. Okay. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1400 mm below the sea level. Below the sea level. समुद्र के अंदर, सी के अंदर एक सबमरीन है, वो कितने डेप्थ पे है? हाउ मच? 1400 मीटर. 1400 मीटर. व्हाट? सबमरीन. यहाँ पे क्या है आपका? सबमरीन. सबमरीन. क्लियर? हाउ मच डेप्थ पे? 1400. कितना है ये? 1400. क्लियर? सबमरीन कहाँ पे है? जस्ट below the sea level. How much depth? 1400 meter below the depth, below the sea level. And above the sea level, the height of plane is 6300 or 6300 meter. Clear? Find the vertical distance between them. अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? So distance between height of plane is given 6300 meter. Depth of submarine, how much? 1400 meter or 1400 meter. Okay. So distance, vertical distance between them. Vertical distance between them. दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? Okay, so this distance plus this distance, यहाँ से यहाँ तक की दूरी and this distance. Clear? Both you will add. दोनों का क्या करेंगे आप? Add करेंगे. So 6300 plus 1400. Add 0, 0, 7 and 700. 7,700 meter. Clear? This is the vertical distance between the plane and submarine. Plane and submarine. Clear? Okay. Now we proceed to the next question. Fourth one. Okay. Next question. Fourth. A submarine is floating 50 m below the sea level. सी लेवल से नीचे कितना? 50 m, 50 मीटर नीचे एक सबमरीन फ्लो हो रहा है. दिस सी लेवल, ओके. बिलो 50 m, 50 मीटर नीचे. यहाँ पे क्या है आपका? सबमरीन. ठीक है, यहाँ पर सबमरीन है. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. It goes down a further 380 meter to a point A.
राइट डाउन डेप्थ ऑफ द पॉइंट ए बिलो द सी लेवल. अब क्या रहा है ये और नीचे चला जाता है कितना 340 मीटर और नीचे पॉइंट ए 380 मीटर 380 मीटर goes down further नीचे और जाता है. सबमरीन कितना नीचे जाता है इस पॉइंट ए क्लियर ये और नीचे चला जाता है. सो फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सी लेवल. आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा फाइंड करना है कितना होगा. दिस डेप्थ को आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो डेप्थ ऑफ पॉइंट ए क्या करेंगे आप व्हाट विल डू एड बोथ डिस्टेंस 50 मीटर प्लस 380 मीटर 50 मीटर प्लस 380 मीटर. सो एड दिस वन 0 8 प्लस 5 13 3 carry 1 3 plus 1 4 430 this is the actual depth of point A which is the sea level. Now second question, from point A it rises 120 meter to another point B. अब करा पॉइंट ए से फिर से ये ऊपर कितना आ गया 120 मीटर ऊपर आ गया. कितना आ गया पॉइंट ए से कितना ऊपर आ गया 120 मीटर यहाँ पे आ गया. सबमरीन यहाँ पहुंच गया पॉइंट बी पे कितना हाउ मच 120 मीटर इतना ये ऊपर आ गया बी पॉइंट पे 120 मीटर. ओके क्लियर. नाउ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट बी विल सी. सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट बी. सो टोटल डेप्थ ऑफ पॉइंट ए 430 मीटर. सो डेप्थ ऑफ पॉइंट बी दिस मच डिस्टेंस विल फाइंड. यहां से यहां पे आप फाइंड करेंगे. So subtract this 120 from 430. So depth of second question, depth of point B, depth of point B 430 minus 120. So it becomes 0. It becomes 0, and here 3 minus 2 1 4 minus 3. 3 4 minus 1 3 meter. Clear. So this is the what 310 meter depth of point B. Clear. Depth of point B. Okay. Now we will proceed the next question. Fifth. Next question. Fifth. Okay. In a hotel, food is stored in a freezer at 20 minus 20 degrees centigrade. Initial temperature given. Initial temperature of food is given. Question number 5 first. Initial temperature of food. How much? Minus 20 degree centigrade. Initial temperature given. Okay. Now, what would be the temperature if it was raised by 5 degree centigrade? कह रहा है फूड का टेम्परेचर क्या होगा. ओके इफ इट वाज रेज्ड अगर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया था तो या बढ़ा दिया जाए तो ओके व्हाट वुड बी द टेम्परेचर क्या होगा या क्या रहा होगा इफ इट वाज रेज्ड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो फर्स्ट पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन गिवन दिस. First part, temperature of food. First part. Now, temperature of food. Temperature of food. If it was raised by how much? 5 degree centigrade. So minus 20 plus
5 degree centigrade, minus 15 degree centigrade. Clear? Second part, what would be the temperature if it was lowered by 0.5 degree centigrade every hour for 12 hours? Means then what would be the temperature? क्या होगा इसका टेम्परेचर अगर जो फूड का टेम्परेचर है वो पर आवर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया जा रहा है, लोअर मतलब कि डिक्रीज किया जा रहा है अप टू 12 आवर, कंटिन्यूसली 12 आवर तक इसको डिक्रीज किया जा रहा है. क्लियर? सो अगेन टेम्परेचर ऑफ फूड. नाउ न्यू टेम्परेचर ऑफ फूड. नेक्स्ट टेम्परेचर क्या होगा इफ इट वाज लोवर्ड बाय it was lowered by 0.5 degree centigrade every hour for 12 hours. Every hour for 12 hours. So 0.5 degree centigrade into 12 into 12. This one plus sign. So क्या करेंगे? 0 lowered means decrease. It means minus 20 degree centigrade minus 0.5 degree centigrade into 12 into 12 डिक्रीज किया जा रहा है ना. सो द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर फूड, हाउ मच it will become 6 degree centigrade, 6 degree centigrade. So it will become minus 26 degree centigrade. Clear? If the temperature of food was lowered by 0.5 degree centigrade every hour for 12 hours. Clear? Okay. Now next question and last for today, sixth question. Question number 6. Question number 6. Okay. Question number 6. In a quiz, the team X scored minus 40, 90, 0, 30 and minus 70. Score of team X. Score of team X. What is this given? Score of team X is given minus 40, 90, 0 and 30 and 30. Score of team Y is given. Score of team Y is given. Y is given 30, minus 50, minus 70 and 10 in 5 rounds. Now question, find the score of two teams. Find the score of two teams. So score of team X, total score of team X is equal to minus 40 plus 90 plus 0 plus 30. Okay, plus 30. 40, 90, 30 and 70. 40, 90, 0, 30 and 70. One more is given here. 30 and minus 70. 30 and minus 70 also. 40, 90, 0, 30 and minus 70. Minus 70. Okay, clear? So score, final score of team X. Final score of team X is what? See here, add positive and negative number together.
ऐड पॉजिटिव टुगेदर एंड ऐड नेगेटिव टुगेदर, एक साथ पॉजिटिव ऐड करेंगे और नेगेटिव को एक साथ करेंगे. सो 40 and 70 minus 110, 90 and 30 120. So final score 10. Final score 10. Total score of team X and team Y. Now we will find the total score of team Y. Total score of team Y. Okay. So what is given? 75, 30 minus 50 minus 70 and 10. 75. One more is given. 75. So 75. Okay. 75 plus 30 minus 50 minus 70 plus 10. Add all positive number together. 75, 30. 105 plus 10 minus 120. So it will become how much? How much? 105 plus 10, 150. 150 minus 120. 120. So the score is minus 5. The score is minus 5. So final score of team Y is minus 5. Clear? So second part. What was the margin by which the victorious team won? कितने से ये इससे जीता है? Here score of team X is 10, team Y is minus 5. तो कितने से ये क्या क्या है? How much? Margin ना, कितने से ये ज्यादा है ना, means margin. Second part, we have to find what? What was the margin by which the victorious team won? जो जीता है वो ये X, वो इससे कितना आगे है, मतलब कितना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है. तो मार्जिन कैसे निकालेंगे? मार्जिन 10 minus of minus 5 equal to 50 is equal to 50. Clear? Margin 10 minus of minus 5. Okay. So students, try to solve the question. Okay. 1 to 6. Next we will discuss in next class tomorrow. Okay. Thank you students. Solve the questions. Answer is here I given. Clear? Okay. Thank you students.